have learned previous lecture what is meant by linear equation and base of linear equation in two variable. But now today's topic is practice set 1.2. इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. सो स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. लिसन केयरफुली. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन मीन्स ग्राफ फाइंड करने के लिए जो पॉइंट की जरूरत होती उतना ही सिर्फ पॉइंट आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यूज. So question number first, x plus y equal to 3, linear equation in two variable. So first we use x equal to any three values. Suppose x equal to 1, x equal to 2 and x equal to -1. We put x equal to 3 number, any 3 number, कौन सी भी आप ले सकते हो. So first x equal to 1, 2, -1. So first x equal to 1, put x equal to 1, put equation 1. So x equal to 1, so 1 plus y equal to 3 minus x plus y equal to 3. Y equal to plus 1 right side में गया so -1, so y equal to where we put x equal to 1 then we get y equal to 2. जब आपने x की वैल्यू पुट अप की then आपको y की वैल्यू मिली as it is x equal to 2 in equation 1. अब x equal to 2 पुट अप करना है so 2 plus y equal to 3, y equal to 3 minus 2 then y equal to 3 minus 2 1. X equal to 2, then we get y equal to 1. Then last x equal to -1. X equal to -1. So -1 plus y equal to 3. -1 right side में है तो +1. So y equal to 3 plus 1 equal to 4. Y equal to 4 means y की x की वैल्यू -1 पुट किया देन y इक्वल टू 4 मिला आपको. ठीक है. एट इट इज x की आप कौन से भी 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो देन आपको y की वैल्यू मिलेगी. तो इसका टेबल ड्रा करते रखते एक बार x y when x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू +2. ठीक है. देन x इक्वल टू 2 पुट ऑफ किया देन y इक्वल टू कितना मिला 1. देन लास्ट x इक्वल टू माइनस पुट ऑफ किया y इक्वल टू कितना मिला सो -4 -1 4. सो आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एनी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन मिलेगा आपको x की कौन सी भी 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो y की वैल्यू मिलेगी देन उसको आपको ग्राफ फाइंड करना है. जब बोला तब अभी आपको ग्राफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है. देन सेकंड क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 4. इसमें भी एनी 3 नंबर पुट अप करो x इक्वल टू -1 0 2 -1 0 2. फर्स्ट x इक्वल टू -1 पुट द इक्वेशन 1. पुट x इक्वल टू -1 in equation 1 में x की वैल्यू -1 पुट अप सो x इक्वल टू -1 माइनस y इक्वल टू 4 माइनस y इक्वल टू +4 -1 राइट साइड में गया तो +1 सो -y इक्वल टू 5. माइनस से मल्टीप्लाई क्योंकि एक्सिस पॉइंट माइनस में नहीं रहता सो y इक्वल टू -5 -5. सेकेंड 0 पुट अप करो x इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 पुट अप सो 0 माइनस y इक्वल टू 4 सो माइनस y इक्वल टू 4
माइनस वाई से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, सो वाई इक्वल टू -4. Then last, x equal to 2. Put in equation 1. X equal to 2 dot 2. So 2 minus y equal to 4 minus y equal to 4 minus 2. Minus y equal to 4 minus 2, 2. Then minus से multiply y equal to -2. y equal to -2. टेबल ड्रॉ करके रखो. When x equal to put -1, then we get y equal to -5. -1 -5. Then second 0 put up किया, then आपको -4 मिला. Then last we put 2. Then y equal to -2. Question number first, complete the following table to draw graph of the equation. ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ के लिए जो इक्वेशन रहता है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x plus y equal to 3. We put x equal to any 3 number, but now I am putting value x equal to 1, 2, -1. जब आपने x पुट ऑफ किया तो 2 मिला, 2 पुट ऑफ किया -1, then -1 पुट ऑफ किया तो 4. As it is, solve example number second. रीड से देखो, लिसन. ऐसे एज इट इज इक्वेशन आपको सॉल्व करके देखना है. देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जांपल आपको परफेक्ट आएगा, क्योंकि ये एग्जांपल, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये वैल्यू फाइंड करनी नहीं आएगी तो आपको ग्राफ नहीं आएगा. ग्राफ के लिए फर्स्ट आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, ये टेबल. क्योंकि ये दोनों टेबल पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो ग्राफ आपको फाइंड करना है, जो ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, इसके लिए ये पॉइंट, ये टेबल होना जरूरी है. इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ की जरूरत नहीं है. ठीक है.